वेलकम ऑल। इकोनॉमिक्स के इस स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम में आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ। पिछले सेशन में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस कर रहा था, सब्जेक्ट मैटर वगैरह डिस्कस कर रहा था। इस स्पेशल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस एक्सेट्रा। तो हमको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल or the economy in totality. It is the study about aggregates. It is an attempt to study the problems of economy in wider perspectives. As a method of economic analysis, macroeconomics has much theoretical and practical values, much theoretical and practical use. We can discuss first the uses of macroeconomics or the importance of macroeconomics. First importance, we can say macroeconomics will help us to understand the working of the economy. Macroeconomics variables से हमको पता चलेगा economy कैसा है, उसका जो फंक्शनिंग कैसा है, ये सब चीज़ें मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल से पता होता है। और उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंस हम बता सकते हैं, मैक्रोइकोनॉमिक्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज। देखिए, मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स आर द whether it is related with the price level, or it is related with aggregate demand, or it is related with total employment, or it is related with GDP. All this will give some idea about what is going on the economy. Is there any issue? For example, if unemployment is increasing, then it is an issue. Or if the price level is increasing, that means if inflation is there in the economy, then it is an issue. Macroeconomics will give some idea what issues are there in the economy. So macroeconomics will help you to understand various economic issues. Then third, we can say macroeconomics will help in business decision making. बिजनेस डिसीजन मेकिंग में मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, इकोनॉमी कैसा चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से आपको पता चलेगा। कैसे चल रहा है कि जैसे एग्रीगेट डिमांड ठीक है, या इज देयर एनी डिमांड डेफिशिएंसी इन द इकोनॉमी? हाउ इज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एग्रीगेट सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा इन द इकोनॉमी? What is the direction of employment in the economy? So business decision making में ये सब चीज़ों का काम आते हैं। कैसे आते हैं? Whether they want to increase the production while fixing the price of the commodity, while making decision about the investment, all these things they will get some direction from these macroeconomic variables. क्या करना है? अगर डिमांड डेफिशिएंसी है तो वहाँ बिजनेस डिसीजन मेकिंग लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि डिमांड कम हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, रिसोर्स को बचा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फीजिबल टाइम है या नहीं है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, उसके चाहे उसका प्राइस फिक्सेशन हो, चाहे उसका जो आउटपुट का जो फिक्सेशन हो, चाहे प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, इसको ये पता चलेगा कि डिमांड डेफिशिएंसी है या ठीक है, डिमांड एग्रीगेट डिमांड का जो पोजीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट का पोजीशन क्या है, लोगों का इनकम का पोजीशन क्या है, नेशनल इनकम, एग्रीगेट इनकम का पोजीशन क्या है, प्राइस लेवल कहाँ जा रहा है। तो ये सब देख के बिजनेस सेक्टर कैन टेक डिसीजंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग. It will enable the authority to plan everything in the economy in accurate manner, in efficient manner, in the sense that macroeconomic variables will give them some direction, which areas are to be concentrated, which areas are to be attended, which areas are to be corrected. So on the basis of that, they can formulate policies. Macroeconomics help in economic planning too. It helps us to understand whether the economy is growing or not.
In economic growth and development, macroeconomics will help you. What is the position of GDP? What is the current status of GDP? What is the trend related with GDP? Per capita income? And all these things will give you some direction, some clue about whether the economy is growing or not. So, macroeconomics also will help us to understand the growth and development of the economy. Macroeconomics also help us to understand monetary related issues, whether the money supply is higher or lower, what is the trend, inflation is there or deflation is there in the economy. All these things can be understood correctly by macroeconomics variables related with price level. इकोनॉमी पे मनी सप्लाई का जो पोजीशन क्या है, whether it is sufficient or not sufficient, what is the value of the money in the economy, all these things can be rightly understood by looking into the macroeconomic variables related with the price level. So the authority can make policies on the basis of that. If the price level is not stable, if it is in high, that means if inflation is there in the economy, then in order to curb inflation, the authority can make policies. So macroeconomic variables related with price level will give some idea about monetary related issues in the economy. Then macroeconomics will help you to understand material welfare. Material welfare in the sense that whether the economy is growing or not, whether the welfare of the people is growing or not, GDP बढ़ रहा है, per capita income बढ़ रहा है सपोज, देन हम करेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा वेलफेयर भी बढ़ रहा है, हमको ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, ज़्यादा इनकम मिल रहा है, उससे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है, ज़्यादा चीज़ें हम खरीद सकते हैं क्योंकि इनकम भी बढ़ रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है. तो ये सब चीज़ें जो हैं जीडीपी, पर कैपिटा इनकम एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स से हमको पता चलता है. तो मटेरियल वेलफेयर को करेक्टली जानने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज़रूरी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पैराडॉक्सेस. Paradoxes in the sense that sometimes what is meaningful, what is helpful in terms of economy is may not be helpful for the individual. Sometimes what is good for the individual may not be good for the economy. Some paradoxes are there. This type of paradoxes can be rightly understood through macroeconomic variables or through macroeconomics itself. For example, individual saving is a blessing. But if each and every individual in the economy save more, then that is not good for the economy. It is a curse for the economy because aggregate demand will decrease. If aggregate demand decrease, then there will be some negative multiplier effect of that, in the sense that if aggregate demand is decreased, then the producers will decrease the production also. Due to that, unemployment will increase. Then the income will decrease again, then there will be slowdown process in the economy. So what may be true in the case of individual may not be true in the case of economy as a whole. This type of many paradoxes are there in the economy. In order to understand these paradoxes, macroeconomics will help you. Sometimes there will be boom, sometimes recession, sometimes depression. All these things can be correctly understood by using macroeconomic variables. जीडीपी रेट हो, पर कैपिटा इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट रेट हो, इनकम लेवल हो, ये सब चीज़ें देख के पता चलता है इकोनॉमी ग्रोइंग है या इकोनॉमी में अब स्लो डाउन है, रिसेशन है या डिप्रेशन है या बूम है, ये सब चीज़ें. तो बिजनेस साइकिल्स को ठीक से मालूम करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आपको हेल्प करेंगे. देन अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इट हेल्प अस टू टेक right economic policies in right time. Macroeconomics will help the authority to take right decisions in right time related with economic policy, right economic policy. There can be two policies, fiscal policy, monetary policy. Fiscal policy related with the expenditure of the government, whether it should be increased or decreased. And the monetary policy related with money
सप्लाई एंड मनी डिमांड इन द इकोनॉमी। प्राइस लेवल के मूवमेंट करेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए, करेक्टली समझने के लिए डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स रिलेटेड विथ मनी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड करेक्टली, उसके बारे में समझना पड़ेगा। इकोनॉमी पे डिमांड कैसा है मनी का और उसका जो सप्लाई कैसा है, तो उसी के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेना पड़ेगा, डिफ्लेशन है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो क्या पॉलिसी कब लेना है, कौन से वक्त पे लेना है, इसका जो आइन वक्त क्या है, ये सब चीज़ें जो पता करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स विल हेल्प यू। Macroeconomics also will help you in international economics, in international trade. Trade related matters are there, related with import, related with exports, related with balance of payment positions, related with exchange rate. So all these things are related with macroeconomics variables. If the overall balance of payment position we know, then only we can formulate correct the national trade related policies. So इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना यूज़ है, चाहे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन हो या रेट रिलेटेड विथ एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो या हमारे पर्टिकुलर तारीफ रिलेटेड पॉलिसीज़ हो। ये सब चीज़ें करेक्टली पता करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कुछ वेरिएबल्स हमारे सामने होना चाहिए, जैसे बीओपी पोजीशंस वगैरह, वेदर बीओपी डेफिसिट इज देयर और सरप्लस इज देयर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फॉर्मुलेट करेक्ट पॉलिसीज। सो ऑल दिस आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी और टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इश्यूज। मैक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प अस to form या to formulate correct economic policies. Macroeconomics will help us in order to understand economic growth and development. Macroeconomics will help us in order to understand different economic issues. Macroeconomic will help us in order to make economic planning. Macroeconomics will help us in order to identify monetary related issues. Macroeconomics will help us in order to understand paradoxes, different paradoxes. Macroeconomics will help us. Then in international trade also macroeconomics will help us to correctly formulate different policies. So all these are the importances of macroeconomics. Now let us discuss about the limitations. Macroeconomics also has its own limitations. First limitation we can say, macroeconomics is composed with certain fallacies. Fallacy of composition we can say. Aggregate economic behavior is the sum total of individual activities. But what may be true in the case of individual may not be true in the case of aggregates. And what may be true in the case of aggregates may not be true in the case of individuals. That already we told, already we explained. Individual saving is a blessing. But when it comes collective aggregates, if aggregate saving is increasing, that is not a good sign for the economy, for economic development. And the same manner and vice versa also, sometimes what may be true in the case of economy as a whole may not be true in the case of individual. Economic growth, for example, it may increase, good sign it is, GDP is increasing, economy is growing. Then if it is because of the technological advancement, then the other side will be there. That means unemployment might be increased. Lot of people might lose their employment. Technological advancement से दूसरा पार्ट पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हो, बिकॉज ये पर्टिकुलर ग्रोथ जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे साइड पे वहाँ है। तो ये जो है फॉल्स कंपोजिशन है, ये सब चीज़ें एक इंडिविजुअल के केस में क्या सही होगा वो मुल्क के केस में, एग्रीगेट्स के केस में सही नहीं हो सकता है। और जो
मुल्क के केस में, एग्रीगेट के केस में सही होगा वो इंडिविजुअल के केस में सही नहीं हो सकता है हमेशा. सो दैट इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन false compositions. Second limitation, macroeconomics consider the aggregates are homogeneous, but aggregates are not homogeneous. All the aggregates are not homogeneous. केनेथ ई बोल्डिंग इसके बारे में जो बताया है उन्होंने बहुत राइटली एक्सप्लेन अबाउट इट. केनेथ ई बोल्डिंग बता रहा है 6 apples प्लस 6 apples कितना है 13 apples, राइट. Aggregate is quite okay, meaningful. Then 6 apples plus 7 oranges कितना है 13 fruits, right? It is also meaningful aggregate. Then 6 apple plus 7 houses 13 है, 13 what? Is there any meaningful aggregate? So Kenneth Boulding आपसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, aggregates are not homogeneous always, they are heterogeneous. कभी हम नेशनल इनकम के बारे में बता रहा है, नेशनल इनकम का जो फिगर हम दे देंगे, एक टोटल फिगर, एग्रीगेट फिगर मैक्रो इकोनॉमिक्स विल गिव यू. लेकिन उसमें क्या है कि उसमें डॉक्टर्स का सैलरी भी है, इंजीनियर्स का सैलरी भी है, टीचर्स का भी है, और जो डेली वेजेस का सैलरी भी है. ये सब चीज़ों को हम ये उसमें नहीं बांध सकते हैं. They are not homogeneous. We cannot say they are heterogeneous. Next criticism we can say that aggregate variables may not be that much important. For example, economic is growing. There is economic growth in the particular nation. But this economic growth is due to the growth by big industrialists, capitalists. But that will give you a good sign, economy is growing. लेकिन ज़्यादातर लोग आपके जो मुल्क में ज़्यादातर आबादी अभी भी बिल्कुल कुछ ग्रोथ के कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं मिला है उनको. क्या मीनिंग है यहाँ ग्रोथ का? सो एग्रीगेट वेरिएबल्स, एग्रीगेट वैल्यूज may not be important. So Kenneth Boulding called all these 3 criticism as paradoxes. ये सब पैराडॉक्सेस के नाम से Kenneth Boulding बता रहा है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज based on false compositions. Then aggregates are homogeneous. Then aggregate variables may not be necessarily important. Another criticism, aggregates are approximations, not reality. Almost हम बता सकते हैं, GDP कैलकुलेट किया, GDP almost हम बता सकते हैं कि reality नहीं है, approximations है. Then another important limitation related with aggregates, related with macroeconomics is statistical and methodological difficulty in order to calculate all these aggregates, because macroeconomics is related with aggregates. Statistical accuracy that we had to rely upon, but this statistical accuracy is somewhat difficult. Calculations में error हो सकता है. अगर error हो सकता है तो फिर उसी से रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस वगैरह वो भी एरर हो जाएगा. देन अगेन ऑलरेडी हमने जो बताया, एक और लिमिटेशन हम बता सकते हैं, व्हाट इज़ राइट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल may not be right in the case of economy, and what is right in the case of economy may not be right in the case of individual. ये दोनों चीज़ है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक लिमिटेशन में है. इंडिविजुअल के केस में क्या सही है वो इकोनॉमी के केस में हो सकता है नहीं सही, और इकोनॉमी के केस में क्या सही है वो इंडिविजुअल के केस में गलत हो सकता है. ऑल दिस आर द लिमिटेशंस. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन fallacy of compositions, and it treats aggregates as homogeneous. Then aggregate variables, aggregate values always may not be important. Then aggregates are just approximations, not real one. Then again, what may be right in the case of individual may not be right in the case of economy, and what will be right in the case of economy may not be right in the case of individual. Statistical and conceptual accuracy is somewhat difficult. So all these are the limitations of macroeconomics.